ID which is directly linked with the individual's Aadhaar based identification number, where the individual record will be enrouted through the ABA ID only. That's what I wanted to explain here. Yes. Because unfortunately I am unable to explain because of the time constraint. Yes. So not only the ABA ID for an individual, HFR ID for the health facility registration, and also HPR ID for the health professionals. It can map the doctors and the hospitals as well as the individual. Okay, and now in this time, the lot of hospital are working on UHID. That's what Yes, I'm saying. yes. UHID is also linked with the ABA ID. ABA ID, yes. So where that's what I was telling. Where UPI system, where you are having your bank account, here you are having a digital health account where you can share your information. That too, precision. What kind of information I need to share, whom to share, that you can decide. That is a purely based on the your password or the OTP based. And more than that, one more thing is I wanted to tell you is, so where your health information will be longitudinally shared. It is not only shared among only your facility or your vicinity or your locality. It can be shared longitudinally. Thank you, Super. Thank you. Anything else? Any questions from audience? Thank you. Thank you, sir, for your presentation. May I kindly remind the presenter to adhere to the allotted time for the presentation, that is within 5 minutes. Now I would like to call Sandeep Nisad. Ankita Pandey. Sorry, Ankit Pandey. Okay. Hello. Well, good afternoon, everyone. My name is Ankit Pandey. I am PhD scholar at this MGUG. Department is Faculty of Pharmaceutical Science. Basically, ये जो आप यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं, ये मेरा रिव्यू आर्टिकल है जिसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. अगला 5 मिनट अगर ऑडियंस मुझे बहुत ध्यान से सुन लेगी तो कई वैल्यूएबल नॉलेज मैं आपको देके चला जाऊंगा. तो इसको कैन यू प्लीज, अच्छा मिल गया. आई थिंक आई एम गेटिंग नर्वस. ये चल नहीं रहा. नहीं चल रहा. Well, instead of taking you to the chemistry, taking you to the pathways, बहुत लंबा चौड़ा मैं नहीं खींचूंगा, बहुत सिंपल से आप लोगों को चीजें समझाऊंगा. हर किसी क्लिनिक में या कहीं रियल लाइफ में आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई एक स्किन पेशेंट आपने जरूर देखा होगा जो किसी क्रोनिक स्किन डिसीज से सफर करता है. अब उसके जिंदगी में मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलूंगा. तो प्रतिदिन ऐसा समझ के चलिए कि वो अपने आप को सही करने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड लगाता है, एंटी फंगल क्रीम लगाता है, एंटी बायोटिक के जेल लगाता है अपने एक्ने को सही करने के लिए, परंतु ये सब कुछ एक समय के बाद में फेड हो जाता है. एंड इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया जिनके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिस फंगस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक समय आता है वो भी रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं. ये किसी एक इंसान के बारे में बता रहा हूं. अब आपको थोड़ा जान के हैरानी होगा कि तकरीबन 180 करोड़ लोग पूरे दुनिया में केवल पीड़ित होते हैं स्किन डिसीज से. स्टेरॉइड लगाते हैं, टेम्परेरीली आपको सोल्यूशन मिल जाता है, मगर समय के बाद में आपके स्किन को पतला कर देता है, जिस वजह से होता क्या है कि स्किन बहुत ज्यादा पतला होने की वजह से कई और कॉम्प्लिकेशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं. और फिलहाल 5 मिनट होने के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सीधे पॉइंट पे जाता हूं. तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज दैट सोरासिस
एटॉपिक डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन और एक्ने, ये सबके कुछ एक्ने तो लगभग सभी लोगों के जीवन में ये आता ही आता है। तो मैं क्या सोच के रखा हूं कि एक ऐसा फॉर्मुलेशन डेवलप करने जा रहा हूं जिसके ऊपर मैं रिव्यू आर्टिकल लिखा हूं, तकरीबन 6 अलग अलग कंपोनेंट। एक चीज समझिएगा, अगर इफ आई एम गोइंग टू इफ आई एम थिंकिंग दैट आई विल विन अ वॉर विद अ सिंगल स्ट्रेटजी, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये भी स्किन डिसीज भी किसी वॉर से कम नहीं है। ये एक इंटरसेक्शन पे आके बैठता है इम्यूनिटी के, सॉरी, ये इंटरसेक्शन पे आके बैठता है इम्यूनिटी के, बायोलॉजी के, सेल के, और साथ ही साथ इंफ्लेमेशन के। तो जब भी हमको स्किन डिसीज को सही करना है तो पहले हमको कोई एक ऐसा चीज चाहिए जो मैच करे स्किन के कॉम्प्लेक्सिटी से। यानी कि स्किन डिसीज जब होता है तो इंफ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, स्किन के बैरियर्स खराब हो जाते हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप आसानी से चीजों को फॉर्मुलेट कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं एक ऐसा पॉली हर्बल सॉल्यूशन खोज रहा हूं। जब मैं ये रिव्यू आर्टिकल लिख रहा था तो मैंने देखा कि 10 में से 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया मुझे रहने दो, टॉपिकल स्किन पर चीजों को लगा के मैं खुश हूं, मगर 7 जो हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं, किसी प्लांट को खोज रहे हैं, कि किसी प्लांट बेस्ड मेडिसिन को खोज रहे हैं कि वो उनको जल्दी से जल्दी सही किया जाए। तो इसी वजह से लिहाजा मैंने पॉली हर्बल सॉल्यूशन जो है कुछ सोच के रखा है, और मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 4 तरह के एसेंशियल ऑयल को जोड़ रहा हूं। अभी को मैंने आप लोगों से बोला एक चीज कि इंटरसेक्शन पे आके बैठता है 4 चीजों के हमारे ये स्किन डिसीज, जहां पे सबसे पहला इम्यूनिटी, और दूसरा हो जाता है हमारा इंफ्लेमेशन, तीसरा बायोलॉजी ऑफ द बैरियर बायोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन 4 चीजों को सही करने के लिए मैंने क्या कर दिया है कि 4 अलग अलग एसेंशियल ऑयल्स को, 4 अलग अलग एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन देखने को मिलता है। तो 2 चीजों पे तो हम पहले ही जीत चुके हैं। फिर उसके बाद बारबेरिन जो है एंटी सोराटिक एक्टिविटी रखता है, बहुत ही अच्छी चीज है, ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है ये, और एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन भी रखता है। जब भी किसी को दांत खाद खुजली या कोई स्किन डिसीज होता है ना, तो सबसे पहले कीराटिनोसाइट्स जो होते हैं हमारे डर्मिस के ऊपर ही पाए जाते हैं, हमारे एपिडर्मिस का एक हिस्सा है, 80 से 90% ये वही पाया जाता है। तो ये सबसे तेज डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं, और जब ये तेज डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं तो इसी वजह से स्केल और पैचेस आपको देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट, नारियल का तेल, बचपन से हम सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर लॉरिन एंड मोनोलॉरिन पाए जाते हैं, और ये एक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी रखते हैं, जिस वजह से इन 6 का कॉम्बिनेशन जो है ये सबसे सटीक बनाता है हमको स्किन डिसीज को सही करने के लिए, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन भी सही करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारेगा, और जो ये VOC दैट इज वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारे स्किन के बैरियर को सही कर देगा। आई थिंक मैं थोड़ा और समय ले सकता हूं। No, it's time over. Ankit, can you tell me any data have you reported about berberine on toxicity study? In this PPT I have not reported anything like that. नहीं, have you read this कि any toxicity have been reported about berberine Sir. and about your coconut oil? सर टॉक्सिसिटी तो लगभग सभी की है, परंतु जब इनका कंसंट्रेशन हम बहुत ज्यादा लेते हैं। Have you seen any data? Have you seen or not? सर रिव्यू आर्टिकल तो Tell me yes or no. सर Have you seen toxicity data or not? सर बट ऑब्वियस है, Tell me ना yes No, or no. देखा तो है मगर अब But याद you नहीं आ seen- रहा है, तो नो ही मान के First you चलते हैं। seen about toxicity data, यस सर, about coconut oil as well as your berberine. ओके Okay, सर, then you start your performance. ओके सर, Okay. थैंक यू सर। Any question from audience? हेलो Sir, what is the rate limiting step of the skin during drug delivery? एक मिनट बेटा, अब से हमको बोलना थोड़ा ध्यान से, मुझे सुनने में थोड़ा सा। What is the rate limiting step of the skin during drug delivery? मैं क्वेश्चन को क्लियरली शायद समझ ना पा रहा हूँ। आप कुछ उसको अगर तोड़ के समझाने की कोशिश करें तो शायद एक बार मैं समझ लूंगा तो अच्छे से आपको समझा दूंगा। सर स्किन में जो ड्रग डिलीवरी के टाइम उसका रेट क्या होता है? अभी बेटा यहाँ पे हमने इसका कुछ ऐसा सच बनाया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है अभी जिस पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अभी ये कुछ अभी अस्तित्व में नहीं है, ये मेरे PhD का वर्क है कि ये एक प्रपोजल है कि ये ऐसा होगा, तो अभी इसे फॉर्मुलेट नहीं किया मैंने, तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा इस पे आपको। थैंक यू। Thank you. Thank you, Ankit Pandey. Now I would like to call Shweta Yadav. Next presenter is Shweta Yadav. Okay.
Good afternoon, everyone. Myself Sweta, research scholar, and today my topic of presentation is just a review on nanostructured drug delivery system for oral anti-diabetic therapy. तो हम सभी जानते हैं कि जो डायबिटिक है आज के टाइम में वो ग्लोबली एक इपेंडोलॉजिकल एक बर्डन हो गया है। मैक्सिमम ये अगर बात करें तो मेजॉरिटी में ये मैक्सिमम पर्सन को ये होता ही है। बेसिकली डायबिटीज हमारे कॉमनली 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड नेक्स्ट वन इज गेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें जो भी हमारे अभी अवेलेबल एंटी डायबिटिक ड्रग है उसके साथ कुछ जो भी कन्वेंशनल एंटी डायबिटिक ड्रग है उसके साथ कुछ थेराप्यूटिक इफिकेसी बैरियर है, जैसे कि आपका पोरस सॉल्युबिलिटी है, जीआईटी डिग्रेडेशन है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है एंड इनएडेक्वेट प्लाज्मा कंट्रोल है। तो जो भी ये रिव्यू आर्टिकल है जस्ट यही है कि जो भी हमारे कन्वेंशनल एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ जो भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है उसको हम बेसिकली नैनो स्ट्रक्चर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू उसको ओवरकम करने का काम करें। तो जो भी हमारे नैनो स्ट्रक्चर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है बेसिकली वो पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल, ये कुछ हमारे मेथड्स होते हैं जिसका हम यूज करके बेसिकली जो भी हमारे थेराप्यूटिक बैरियर्स हैं उसको हम ओवरकम करने का काम करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल, नैनो इमल्सन, लाइपोसोम, न्यूजोम एंड नैनो स्ट्रक्चर लिपिड कैरियर्स। जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली वो यही है कि हम सॉल्युबिलिटी को एनहांस करने का काम करते हैं, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को एनहांस करने का काम करते हैं, जो भी हमारी लिम्फेटिक टारगेटिंग होती है उसको हम करते हैं एंड नेक्स्ट है हमारा जो भी जीआईटी प्रोटेक्शन है, जो भी हमारे जीआईटी फ्लूइड से ड्रग का डिग्रेडेशन हो जा रहा है बेसिकली उसको हम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Excuse me. Slide are you? सर नेक्स्ट हो नहीं रहा। सिस्टम की तरफ ना डेस्कटॉप इधर है, उधर उधर करो ना तब चलेगा। आई थिंक बैटरी हो गया। आप मैं बोली सारा तरीका वो आफ्टर दैट जो भी हमारा मैकेनिज्म को फॉलो करके हम जो भी हम फार्माकोकाइनेटिक एडवांटेजेस हमें जो मिलती है वो जस्ट है कि आपका सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड जीआईटी रेजिस्टेंट, टारगेटेड डिलीवरी। कहीं ना कहीं ये तीनों पैरामीटर्स को हम फॉलो करके अपने जो भी हमारी बायोमेट्रिक प्रॉब्लम है एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ उसको हम ओवरकम करने का काम करते हैं। जो भी अभी जो भी रिव्यू पेपर्स पढ़ के जो भी हमें रिसर्च गैप देखा है, मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं ये है कि नैनो एफिशिएंट इंटरेक्शन एंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी, टारगेटिंग प्रिसीजन, ये कुछ रिसर्च गैप फाइंड हुआ है। फर्दर जो पाथ फॉरवर्ड है मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, एडवांस इंजीनियरिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिस पे हम अभी भी काम करना बाकी है स्पेशली एंटी डायबिटिक ड्रग। नहीं हो गया। Sweta, it is a very nice title. Do you know about you were mentioning that is lymphatic system? Do you know about any drug that can cross the our hepatic system and that target to lymphatic system?
Do you know? Yes. Anti-diabetic. Yes. Anti-diabetic. Sitagliptin. This drug is reported. This drug is reported by this formulation, solid lipid nano formulation, yeah, other formulation. Okay. Thank you. Yeah. Any questions? Thank you, Sweta. Presenter, please ensure that you have only 5 minutes for your presentation. Now I would like to invite Himangi. Good afternoon, everyone. I'm Himangi Ved, and this is a part of my PhD research which I'm pursuing from Amity University. The topic is multi-target network pharmacology analysis of various phytoconstituents in Parkinson's disease. As we know, when we go for drug discovery, and it takes years, which is being discussed since morning. So we have included a part of some network pharmacology study to find out. We'll go with the background. The background is, we know Parkinson's is a progressive neurodegenerative disease. Means once it will begin, it will not reverse. It will keep on proceeding, and there are wide variety of synthetic drugs available in the market which are used to give the symptomatic relief. They are not curing, they are providing the relief to the symptoms, but again those drugs come up with the wide variety of adverse effects which degrade the quality of life of patients. Already, as the loss of dopaminergic neurons lead to the motor and non-motor symptoms, then again the drugs, they will reduce the symptoms but give other side effects. So we have taken two herbs, that is Cardiospermum helicacabum seeds and Juglans regia kernels, which are known to target the oxidative stress and inflammatory pathway. And we have included network pharmacology because both the drugs, they have numerous phytoconstituents present in them. So by the network pharmacology, at the end of the study, we would know that which particular phytoconstituent is responsible and which pathway it is targeting in our brain, that it is giving relief in Parkinson's. So we started with the extraction of both the phytoconstituents. For Cardiospermum helicacabum, it is oxidation, and for Juglans regia, it is ultrasonic extraction followed by ethanolic extraction. We chose the ethanolic extracts, combined them in the 1:1 ratio, then followed by the FTIR. We got the functional group peaks from the FTIR, and also in the literature for both the herbs, phytoconstituents are reported, which then we cross-verified the peaks with the SDBS library and Dr. Duke's database, and got the list of phytoconstituents which were present in our extract. Then yes. We did the identification of bioactives using this gene net. We have checked the list of genes which were involved in the Parkinson's, and side by side we have taken the data of standard drugs also to keep them as reference. So that is our phytochemical part. This is our synthetic drug part. So phytochemicals, out of 355, 5 genes and pathways were being targeted. For synthetic, 8 were targeted. Then using ADMET2 lab, there we have finalized the genes. Now those phytoconstituents which were showing zero probability have been eliminated. That was verified by ADMET lab 2. Then we got the Swiss ADME data. Using string, we checked the pathways which were being targeted. So for synthetic, it was DRD2, SLC6A, which were mainly targeted, that are dopaminergic pathways. And for synthetic, it was more. They were also targeting LARC2 and tyrosine hydroxylase, means they were targeting the genetic pathways also. Then we did the, using cytoscape, we did the compound and target interaction. So we got that there are 4 phytoconstituents which were targeting acetylcholinesterase pathway, 2 were targeting SLC6A, 2 were targeting DRD2. Means our extract is dopaminergic and acetylcholinesterase targeting. And for synthetic drugs, it is a more complex and
we know that all these synthetic drugs we are not going to administer at once. Then we did the gene ontology pathway enrichment using David annotation and found the dopamine catabolic process and dopamine synapse, dopamine binding were being targeted. For synthetic drugs keeping p-value 0.01, only locomotor behavior were targeted. Then for the cat, we got the gene ratio. For synthetic, it was 0.6 to 0.8, and for the synthetic, it was 0.5 to 0.6. Then finally, we did the bioactive target pathway analysis. Means now we know that when we will provide all these synthetic drugs, they will not be given together. They will target two pathways and 5 targets. But for our extracts, which can be given all together, they will target 9 phytoconstituents will target 5 targets and 3 pathways. So in the conclusion, we can say that the synthetic drugs are pharmacologically specific. They will reduce the symptoms, and our extract will help at the core for the reduction in the development of symptoms. So when they will be given along with the synthetic drugs, the intensity of symptoms will reduce, which will further lead to the reduction in the synthetic drugs and reduction in the adverse effects of those synthetic drugs that are caused. Thank Okay, you. Himangi, for this study, are you planning for in vitro as well as in vivo study? Yes, sir. I will continue. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thank you, Himangi, for the presentation. Now I would like to call Dr. Agrima Mishra. Dr. Kendrika Yadav. Dr. Anirudh Sinha. Next presentee, Nikki. Good evening, everyone. My name is Nikki Byahut from the Department of Pharmaceutical Sciences and Technology at Madan Mohan Malviya University of Technology. Today, I will presenting a review on. Sir, कैसे जा रहा है? Today, I will be presenting a review on essential oil owing antidepressant activity. We all know presently millions of people worldwide are suffering from depression, interfere with work and social relationships. Because of its impact, finding new therapeutic agent is a high priority. This review focuses on essential oils like volatile aromatic plant extracts and their potential antidepressant properties. There is my abstract. Yeah. What is antidepressant drugs? We know all antidepressant mechanism of antidepressant drugs basically act on neurotransmitter like serotonin, dopamine, and GABA. The goal is
to reduce stress-related neurochemical activity and support emotional balance. Uh, Here I'm reviewed only three oils extracted from lavender plants, chamomile, and ylang ylang oil. Uh, these are antidepressant drugs which act on serotonin, noradrenaline, and dopamine pathways. They are extracted from flowers, leaves, bark, wood, roots, seeds, and fruits. The method of extraction is steam distillation, water distillation, solvent extraction, cold compression, and resin tapping. My first oil, lavender oil. The major constituent of this oil is linalool, which gives which gives the antidepressant activity more. Now, second is chamomile oil. Active constituent is alpha bisabolol, apigenin, and luteolin. These are the active constituents which gives antidepressant activity. Third is ylang ylang oil. Major chemical constituent is benzyl acetate, linalool, methyl benzoate, which gives antidepressant activity. Okay, Conclusion Nikki, is- your time is over. Okay, Can you tell me what is your limitations of your review articles? Can you tell me your limitation? It is a review, no? It's review. Sir, basically the review. Review article, no? Yes, sir. Yes, yes. So what is the limitations? सर इस पे जो है एरोमा थेरेपी के थ्रू हम डिप्रेशन को रिड्यूस करने की मतलब ऐसे कोशिश कर रहे हैं जो हमने रिव्यू किया है बस वही है इस पे सर। एक वन लाइन में अगर कुछ कहना चाहती हैं आप आपकी कंक्लूजन में, तो वन लाइन में क्या सजेशन है आपका? सर वन लाइन में जो जैसे कि हम जानते हैं कि डिप्रेशन इज मेजर मतलब डिजीज हो गया है आजकल, मतलब हर एक बच्चे से लेके हर किसी को है, तो अरोमा थेरेपी एक मतलब ऐसा है प्लांट एक्सट्रैक्टेड जिससे हम उसको मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके मतलब जैसे केमिकल अगर हम कोई ऐसे दवाइयाँ लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, बट प्लांट है तो मतलब कि लेस साइड इफेक्ट्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यू हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। Thank you, Nikki, for the presentation. Now I would like to call Ankita Malviya. Good evening, all of you. My name is Ankita Malviya. I am research scholar, MGUG. I am here to present my topic, nano carrier in psoriasis, toxicity, safety, concern, and challenges in targeted topical delivery. सोरियासिस एक हेलो सोरियासिस एक स्किन डिजीज है। सोरियासिस एक स्किन डिजीज है, एक ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस है, ये क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि इस समय 2 to 3% ग्लोबल पब्लिक अफेक्टेड है। 2017 में रिपोर्टेड मिला कि
29% मिलियन एडल्ट जो है इससे अफेक्टेड हुए। ये एक स्किन डिजीज है, आपको पता है जब हमारी स्किन में कुछ होता है तो ये वो भी अपर लेयर में है तो ये बहुत एम्बैरसिंग लगता है। तो ये जो दिखता है ये ड्राइनेस स्किन पे ड्राइनेस के फॉर्म में दिखता है और इससे बहुत ज्यादा इचिंग भी होता है। और इसके अगर कलर देखे जाए तो ये रेड, पिंक, पर्पल, व्हाइट इस कलर का दिखता है और बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो कॉमन एरिया इसमें बताया गया है वो स्कल्प, एल्बो, नी, बैक, लोअर बैक और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने इंक्लूड किए गए हैं। इसमें टाइप्स जो जॉइंट्स में, हेयर में भी, नेल्स में और फोल्ड्स में और अगर ये लेग्स में दिखाया गया आर्थराइटिस के फॉर्म में, ऐसे डिफरेंट फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये जो बॉडी के सेल्स होते हैं फास्ट ग्रोथ होने की वजह से ये पैचेस के फॉर्म में ये स्किन पे दिखते हैं, रेड पैचेस के फॉर्म में। नेक्स्ट है इस करंट जो ट्रीटमेंट है इसका टॉपिकल ट्रीटमेंट है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, विटामिन डी एनालॉग। जो सिस्टमिक जो इसका ट्रीटमेंट है वो मेथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पिरिन है और इसके में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताया गया। जो इसकी लिमिटेशन है वो पुअर पेनिट्रेशन बताया गया है और साइड इफेक्ट भी इसमें है। और इसके जो कन्वेंशनल थेरेपी है जो मतलब इसमें जो कन्वेंशनल थेरेपी इस समय जो यूज किए जाते थे वो पुअर पेनिट्रेशन देखा गया है, हाई डोज रिक्वायरमेंट और इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो लिमिटेशन है, पुअर पेशेंट एडहेसिव साइड इफेक्ट इसमें देखे गए हैं, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इसमें देखी गई है। इसमें नैनो कैरियर पे वर्क कर रही हूँ तो इसमें जो नैनो कैरियर के बारे में बताया गया है कि तो इसमें ये है कि जो नैनो कैरियर जो ड्रग यूज किया गया है उसमें इसकी ड्रग पेनिट्रेशन फास्ट हो गया, जो स्किन की ड्रग पेनिट्रेशन, क्योंकि नैनो कैरियर जो है वो बहुत स्मॉल इसका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होने की वजह से इसमें स्किन पेनिट्रेशन फास्ट है। और इसमें कंट्रोल और सस्टेन रिलीज भी देखा गया है और रिड्यूस साइड इफेक्ट और इम्प्रूव ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। जो मतलब नैनो कैरियर के लिए जो यूज किया गया पॉलीमर वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि सबसे ज्यादा क्या यूज किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा लाइपोसोम यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें बताया गया नैनो स्ट्रक्चर लिपिड कैरियर और काफी इफेक्टिव है इसके डोजेस लोडिंग के लिए और सॉलिड लिक्विड नैनो पार्टिकल्स भी काफी इफेक्टिव है, नैनो इमल्शन भी यूज किया गया है। इसके जो चैलेंजेस हैं, अगर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात की जाए, इसके जो चैलेंजेस हैं वो है कि इसमें जो नैनो पार्टिकल्स इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं स्टेबिलिटीज में। और फ्यूचर जो इसमें दिखाया गया है इसके मतलब अगर फ्यूचर इसमें आगे क्या कर सकते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ स्टिमुलाई रिस्पॉन्सिव सिस्टम, लॉन्ग टर्म क्लिनिकल सेफ्टी स्टडीज, ये जो सारी चीजें इसमें और इसमें एडवांस टेस्टिंग विद 3D स्किन मॉडल्स के बारे में भी इसमें दिखाया गया है। Okay, Ankita, you are mentioning that in case of cirrhosis, the level of ROS, that is reactive oxygen species, is high. So, can you tell me which type of reactive oxygen species is elevated in case of cirrhosis? You are mentioning, na, Yes. that in case of cirrhosis, Yes, the sir. reactive oxygen species has been elevated, is elevated. Yes, sir. And can you tell me which type of reactive oxygen species is elevated during the cirrhosis? Ma'am, which recent formulation released in market for psoriasis? Which reason? Recent formulation released in market for psoriasis. Nano formulation. Thank you, ma'am. सॉरी सर, क्वेश्चन ही समझ में आया। नैनो जेल्स मार्केट में कोई अवेलेबल है सोरियासिस के लिए? इनका क्वेश्चन ये है। सर नो आइडिया। जेनेटिक प्रीडिपोजिशन का मतलब जानती है? ये सर जेनेटिक प्रीडिपोजिशन इन केस ऑफ सोरियासिस।
जेनेटिक प्री डिफ्यूजन डिफ्यूजन, मतलब सिंपल सी कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सोरियासिस के लिए? टी सेल सर, जीन की मैं बात कर रहा जीन हूँ। कौन सा? सर आरएनए, आरएनए डीएनए रिस्पॉन्स। ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Now I would like to call Rita Rizvi. Rita Rizvi. Preeti Sahani. Preeti Sahani. Saurabh Singh. Saurabh Singh. Hello. Good evening, everyone. This topic is of my research work. So the topic is stress relieving and anti-diabetic potential of hesperidine against high-fat diet-induced obesity in animal models. So basically, we know diabetes is a chronic metabolic disorder which is characterized by persistent hyperglycemia due to impaired insulin secretion, insulin action, or both. It can be of two types, type 1 and type 2. So here we can see if it's healthy pancreas, so it secretes insulin which binds on receptor, so the glucose enter inside the cell. Whereas type 1 is autoimmune disease, so in which pancreas fails to produce insulin, so insulin does not bind to the receptor, so glucose doesn't enter in our cells. This causes type 1 diabetes. In type 2 diabetes, insulin resistance caused, so insulin does not bind to its receptor and glucose level increase in our blood. Basically, the key problems identified by diabetes is first one is metabolic disturbance like impairment of insulin signaling, development of insulin resistance, cellular and molecular damage, lipid peroxidation of cell membrane, sometimes chronic inflammatory disorder like obesity associated inflammation, organ dysfunctions, pancreatic beta cell damage, and impaired immune regulation. Basically, how to reduce diabetes, how to reduce this diabetes. So I performed research in which I've taken 36 mice around, which are divided into 6 groups. First group is normal, second group is standard, and the third one is second one is Jekyll, and the third one is standard, and rest 3 are my test groups, T1, T2, and T3. So 5 groups were fed with high fat diet and hesperidine, and after 3 months, I have done the sacrifice, then taken out the adipocyte tissues, then prepared 10% homogenate and performed the test. So there I found inflammatory markers, TNF alpha and IL-6 seems to be decreased, and oxidative stress marker like LPO and NO is also seems decreased. Whereas in case of diabetes, its inflammatory markers increases and oxidative stress markers increase. These are the results where we can see vehicle as compared to vehicle group, the test group seems to be decreased. Coming to the conclusion portion, the goal of this study is to evaluate the therapeutic effect of hesperidine in an in vivo animal model for anti-anxiety and anti-diabetic condition. So we found that hesperidine oral treatment restore insulin sensitivity in high-fat diet mice by reducing pro-inflammatory cytokines and oxidative stress markers as compared to vehicle treatment. And we also conclude that hesperidine is a
promising candidate for further research and development in treating metabolic disorder linked to inflammation. Basically, this study shows hesperidine improves metabolic parameters in vivo model by controlling oxidative stress and low grade inflammatory cytokines. The future research plan, that's as our result shows anti-inflammatory and antioxidant effect. So our next step is to confirm molecular mechanism. So we'll try to in future we'll try to investigate key signaling pathways involving insulin resistance and anxiety. And this is my acknowledgement. I would like to express my sincere gratitude to my supervisor, Dr. Sunil Kumar Raman, and research team of Department of Pharmaceutical Science and Technology, MUT, and also acknowledge to Professor Vittal Elgole, Head of Department, MUT, and Organizing Committee of the conference. Thank you. Okay, Saurabh, tell me what is your constituent in hi-fi diet? It was basically a lard oil and the supplements like supplements for animals and cholesterol plus normal chow diet. Okay, can you tell me the actual quantity of your hi-fi diet constituent? Which how much amount have you mentioned cholesterol? How much amount are you mentioning other ingredient? Do you know about that? Right now, I don't remember. No. These things is very important. How to develop this model? In 100 gram lard oil, we mixed almost 25 gram cholesterol and 50 gram supplements and the normal chow diet. And where are you purchased from cholesterol? Cholesterol, I have purchased it. I actually not purchased. Actually, I was working in CMAP. So there, okay, you are working the CMAP. Okay, so it was there. Okay. And in your slide, first you also mention your ethical number. If you are presenting anywhere, na, you should also mention your ethical number. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Saurabh, for your presentation. Now, the next presentee is Dr. Yash Khan. I repeat, Dr. Yash Khan. Now, I would like to call Mr. Piyush Anand, sir, for the presentation. क्या कर रहे हो आप लोग? A very fantastic good evening to all of you. I am here on the behalf of Faculty of Pharmaceutical Sciences to represent my topic that graphene neural interface for pharm therapeutics and AI neuromodulation, a new era for the neurodegenerative disease. सबसे पहली बात कि हमारा ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज क्या है? अल्जाइमर से पार्किंसन से ये तमाम समस्याएं हैं जो देश को और पूरे ग्लोब को डिस्टर्ब करके रखी हुई है। समस्या यहाँ पे ये है कि हम अपने सभी बीमारियों को लगभग ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारी न्यूरॉन ही गड़बड़ कर रही हैं, जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन करती हैं, अगर वही गड़बड़ चल रही है तो हम क्या काम करें? तो ऐसे केस में हमने एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रखी है जिसका नाम है ग्राफीन ऑक्साइड सिस्टम से, जिसमें हम अपने पूरे काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द गेम चेंजर सिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन सिस्टम को लेकर के ग्राफीन ऑक्साइड बना जा रहा है। दैट ग्राफीन ऑक्साइड इज हाईली फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब कि जैसे हमारी नसें फूट सकती हैं, झुक सकती हैं, जुड़ सकती हैं, उसी की तरह से ये भी पूरा जो है हमारे ब्रेन में इसको सेटअप करके अपने जो न्यूरो मॉड्यूलेशन न्यूरो ट्रांसमिशन है उसको हम सेटल कर सकते हैं। इस न्यूरो मॉड्यूलेशन न्यूरो ट्रांसमिशन के दौरान हम ये सोच रहे हैं कि क्या इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्या इस तरह से ये माइनस 70 मिली वोल्ट पे ये काम करेगा कि नहीं करेगा। यस, इट इज वर्किंग ऑन दैट सिस्टम। ऐसा कुछ रिपोर्ट सजेस्ट किया गया है। तो इसका फायदा हमें है कि बिल्कुल हमारे न्यूरॉन की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इसकी न्यूरो क्या कहते हैं कंडक्टिविटी आएगी। ये इसके अलावा एक चीज और सपोर्ट में है, दैट इज द पोरोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफीन ऑक्साइड का नैनो पार्टिकल बनाया गया है, इसकी दो क्वालिटी, एक जो कोवेलेंट बॉन्ड सिस्टम है, एक जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड सिस्टम में है।
कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम परमानेंट डैमेज कहीं पे हो चुका है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक है जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड सिस्टम, जैसे पाई चेकिंग, वन टू वन इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसे कंडीशंस में जहां पे हमें कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए न्यूरोनल का कंडक्शन कराना है, मतलब परमानेंट डैमेज नहीं हो चुका है, अभी कुछ नॉर्मल पैरालिसिस चल रही थी, तो इस केस को देखते हुए इस ग्राफीन नैनो पार्टिकल को बनाया गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये आपका नया एक मशीनरी जो सर्च किया गया पोरोसोम आपके ह्यूमन सेल के अंदर में, ये एक ऐसी मशीनरी जो कि एक सिक्रेटरी सेल होती है जो कि हमें बताती है कि कहाँ से हमारा नर्व सेल डैमेज हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आई कहाँ से है। तो ये एक सिस्टम है आपके सामने जहाँ पे हम यूजिंग क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब एक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ऐसा है कि जहाँ पे हम प्रोटीन को लेकर के या किसी वायरस को लेकर के किसी भी बायोमॉलिक्यूल को लेकर के हम उसको स्टैटिक कर सकते हैं। -180 डिग्री सेल्सियस हम उसको स्टैटिक कर देते हैं, वो जम जाता है, उसके बाद हम उसके नेगेटिव स्टेट को हम जान पाते हैं कि एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर है क्या, वो क्या काम करने वाला है। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ प्री क्लिनिकल एविडेंसेस हैं जिसपे हमने कुछ पेपर्स आए हैं हमारे सामने समाज में, जिसको हम लोग अभी और रिसर्च को हम आगे प्रोसीड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ रिपेयर्स को बताया गया है कि जहाँ पे हाई रेजोल्यूशन इंटरफेस है, बैलेंस रिपेयर है, एडेप्टिव इंटरफेस, मतलब कि क्या है कि जैसे हम अगर हमारा मोबाइल खराब हुआ तो हमने एक चिप निकाला, उसको चेंज करके दूसरा चिप डाल दिया, या कोई आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पूरी खराब हो गई, वहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो हमने उस पूरे सिस्टम को हटाया, वहाँ पे नया सिस्टम ऐड कर दिया। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हम अब ऐसा क्या कैसे संभव हुआ, क्योंकि जो हमारा ग्राफीन ऑक्साइड सिस्टम है वो क्या करता है कि जैसे नेचुरल हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो ब्रेन में अपनी मेमोरी को ऑब्जर्व करते हैं, सेम उसी फंक्शन पे ही हमारा जो ग्राफीन ऑक्साइड है और पोरोफॉर्म इनके बिहाफ पे क्या करेगा, उस मेमोरी को बहुत टाइम तक उसको स्टेबलाइज फॉर्म में स्टोर करके रखेगा, जिससे हमारी मेमोरी इनहेंस रहेगी और लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रहेगी। कुछ चैलेंजेस है कि इसको इम्प्लांट कैसे किया जाए ब्रेन में, चूंकि ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, यहाँ पे इम्प्लांट करने की सबसे बड़ी बात समस्या आती है। इस पे कुछ काम हमारे सामने है जो चैलेंज के तौर पे हम देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। अब हमें जो बात यह कि फ्यूचर हमारे सामने ही दिख रहा है कि ग्राफीन ऑक्साइड से हम फ्लेक्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके या न्यूरॉन का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोसेस को कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, if you are implant your graphene, then it can causes any inflammations. Yes, sir. That is the actual challenge where we are seeing in the cryo-electron microscopy, that if we are implanting this system, it may cause some kind of injury as well. But we are trying to develop a flexible system that is made up of a reduced graphene oxide. And that reduced graphene oxide is not going to make any kind of chemical bond with our blood protein or any blood substances, even our oxygen. These graphene systems can penetrate lipid membranes. Sir, it is nanoparticle type system. It can cross, no? Yes, sir. It can cross. So how can you say that this is a beneficial? Sir, if it is not so much lipophilic, then how it will? That's why it is good for us, because our blood-brain barrier is going to targeted for this system. हम अपने सीएनएस को ठीक करने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ग्राफीन ऑक्साइड अगर वहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाती, मतलब उसको लिपोफिलिक मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। No. You are curing for a neurodegenerative disorder. Thus, apart from this neuro disorder, you are also elevate the other diseases like inflammations, oxidative stress. Such kind of reports are not yet reported because it is a very new research, and such kind of not much more research evidence is available. No. You should mention what are the problems. Sure, sir. I will mention it later on. Okay, sir. मुझे एक चीज बताइए, जो ट्रिपल बी है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे? सर, ट्रिपल बी चूंकि हर चीज को पेनिट्रेट करने के लिए रोकती है, हम हर चीज इसमें पेनिट्रेट नहीं करा सकते या वो परमिएटेट नहीं कर देता, तो उस टाइम पे हम जो नैनो पार्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन इसका एक टारगेट और है कि एक तो हमें ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कराना है, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो प्लेट बन रहा है, जो न्यूरोफाइब्रिल ट्रायंगल्स है, बीटा अमलाइड बीटा प्लेक्स बन रहे हैं, उन प्लेट को एग्रीगेशन को रोकना है। एग्रीगेशन के अंदर अगर कोई चीज जा करके काम करेगी तब तो प्लेट को हटाएगी, क्योंकि वो प्लेट इतने कॉन्जुगेटेड बन जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल जो टाउ प्रोटीन हमारी डिसएग्रीगेट होती है वो जाकर के ट्रायंगल बना देती है, और ट्रायंगल इतने ज्यादा एग्रीगेट हो जाते हैं कि वहाँ पे कोई भी चीज, इवन ड्रग मैट्रिक्स भी काम नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे जाकर के हम उस चीज को इस नैनो पार्टिकल के माध्यम से वहाँ फिल्ट्रेशन करा करके उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रायंगल्स रिमूव हो जाए, वो या वो अमलाइड बीटा का जो प्लेट बना हुआ है वो रिमूव हो सके, इसके लिए। मीन्स सीएनएस में आपको पता है कि कोई भी हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम के जो भी सेल्स हैं हमारी, वो सीएनएस में काम नहीं करती हैं।
मतलब काम नहीं करती है, फिर भी मैं ये पूछूंगा कि आप कोई ऐसा इसके साथ कोरिलेशन स्टडी आप देखे हैं, जैसे सर हमारे बॉडी में टी सेल बी सेल भी इस इम्प्लांटेशन के बाद क्या वो एक्टिव होंगी या नहीं? इसका एक सर सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, कि अगर हम कोई भी चीज नई बाहर से एडवांस में ऐड कर रहे हैं तो वो कैंसर काज कर सकती है। तो इसमें टी सेल बी सेल का तो इतना डाटा एविडेंस अभी मतलब नहीं अवेलेबल है, मतलब ऐसा रिपोर्ट में कहीं पे इसका मेंशन नहीं किया गया है। ऐसा कुछ होता तो मैं जरूर उसको कोशिश करूंगा रिपोर्ट करने के लिए। इस स्टडी में आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई इन्फ्लामेशन मार्कर जो भी है वो भी चेक करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला TNF अल्फा, TNF अल्फा क्या है कि वो कैंसर के लिए नहीं है, कि कैंसर के लिए अदर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के लिए इनिशिएट करता है। यस सर, श्योर सर। ठीक है, तो ये भी उसमें आपको देखना पड़ेगा। अदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, नाइस प्रेजेंटेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। Friends, you have any question? Thank you, Mr. Piyush Anand, sir. We have next presenter, Dr. Rida Rizvi. Rida Rizvi. Sir, we have two more. Yes, two more after last one. Respected jury members, good afternoon to you all. Myself, Dr. Rida Rizvi, Senior Resident, Department of Pharmacology, BRD Medical College. Topic of my study is to study antibiotic prescribing patterns and resistant trends in Baba Raghavdas Medical College, Gorakhpur, Uttar Pradesh. Background of my study is that antibiotics are widely used in hospitals, but irrational practices like unnecessary use and prescription of broad spectrum antibiotics, improper dosing, and lack of culture guided therapy have been driven the rise of antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance is a growing global public health threat that will lead to treatment failures, prolonged hospital stay, increased healthcare costs, and higher mortality rates of patients. Understanding local antibiotic prescribing patterns and resistant trends is essential for rational antibiotic usage, policy formulation in hospitals, improving patient outcomes. Aim of my study is to evaluate antibiotic prescribing patterns and antimicrobial resistance trends among hospitalized patients in tertiary care hospital, that is BRD Medical College. Primary objective of my topic is to evaluate antibiotic prescribing patterns, and secondary objective is to assess antimicrobial resistant trends. My study is a prospective, randomized, observational, hospital-based study. Study was conducted in Department of Pharmacology with collaboration with Department of Medicine. Population was hospitalized patients that were receiving antibiotics, and the duration was over 6 months. Sample size was calculated as a total patients of 150 hospitalized patients that were on antibiotics. Here is the inclusion criteria and exclusion criteria. Inclusion criteria was hospitalized patients admitted in medicine department, patient receiving at least one antibiotic that was systemic, patients of either gender, age of the patient was more than 18 years of age, and patients with complete medical records. Exclusion criteria was patient not receiving antibiotics, outpatients or emergency patients that were not admitted, patient discharged within 24 hours of admission, incomplete medical records, and patients who left against medical advice. Here is the flow chart showing the methodology. Hospitalized patients in medicine ward receiving antibiotics were taken. Data was collected in the form of case records and lab reports. Recorded variables like demographics, diagnosis, antibiotic details, empirical therapy or cultural therapy, and culture sensitivity was done. Data was analyzed and outcomes were measured. Here are the result part. So my result is based on the this is the pie chart showing antibiotic class distribution. So in the chart we can see that majority of the antibiotics that were prescribed were from the group cephalosporins. Then 25% were from penicillin,
20% were fluoroquinolones, 10% were carbapenems, and 5% included others. Now this is the pie chart showing whether the therapy was empirical or culture guided. So in 75% of cases, the therapy was empirical, and only in 25% cases, the therapy was culture based. This is the bar graph showing most common isolated organisms. It showed that most common organisms were E. coli, followed by Klebsiella, then Staph aureus, and least were many others. Antibiotic resistant trend. This is also, I have shown it in the form of bar graph. This shows that resistance was in majority of cases it was in third generation cephalosporin, followed by fluoroquinolones, then penicillins, and least were from carbapenems. Concluding my paper topic, significant irrational antibiotic use was observed, rising antimicrobial resistance in tertiary care setup. Recommendation: there should be regular prescription auditing, early culture sensitivity testing, antibiotic de-escalation, and antibiotic stewardship program should be included in the curriculum. Thank you. Here are the references. Okay, Dr. Rida, you are mentioning in inclusion area that is a complete medical record. In inclusion area, which type of medical record you are mentioning? Sir, we have taken the lab reports and the prescription pattern. It is previous or after admission? Sir, it was after admission. Okay, okay. Yes. And in your slide, you are also not mentioning your ethical approval for your study. You should mention. Yes, sir, sorry. And this data has been published or not? Yes, sir. This data is published or not? No, sir, not published yet. Okay, okay. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Dr. Yasa Khan. Good afternoon, sir. The topic of my poster is Artificial Intelligence and Role of Artificial Intelligence in Pharmacovigilance and Adverse Drug Reaction. It is a systemic review in the perspective of India. So coming to background, the adverse drug reaction is a major public health concern and contributes substantially to hospital admission and patient morbidity. In India, the drug safety monitoring is coordinated by the Pharmacovigilance Program of India, which largely depends on the spontaneous reporting by the healthcare professionals. So while the system is essential, it has limitations such as under-reporting, delays in detecting the safety signals, and variability in the documentation quality. Here comes the role of artificial intelligence, which offers promising solution to these challenges. The AI tools can rapidly analyze the large pharmacovigilance data sets. It can identify the hidden relationship between the drugs and adverse events. It extracts the ADR information from unstructured clinical narratives and potentially predicts the safety risk earlier than the traditional method. Because of these advantages, AI is increasingly being explored to strengthen the pharmacovigilance system. So the objective of my study is to systematically review the AI applications in ADR detection to know their effectiveness and the implementation challenges in India. The method used for this was a systematic review conducted using PubMed, Scopus, Google Scholar, and the search covered the studies published between 2010 to 2024 using the combination of keywords like artificial intelligence, machine learning, pharmacovigilance, and adverse drug reactions. The studies that applied AI methods directly to ADR detection, signal identification, or pharmacovigilance workflows were included. The non-relevant and purely theoretical papers were excluded. So based on these, 612 records were identified.
But after removing four duplicates, 548 articles remained. And after checking all the eligibility criteria, only 28 studies met the inclusion criteria and were analyzed in the systematic review. This indicates that although research exists, but the number of high quality research is still very moderate. The characteristics of this study included most research studies were conducted in United States, Europe, China, and very few originated from India. The studies use diverse data sources, including spontaneous reporting database, electronic health records, biomedical literature mining, and even social media for pharmacovigilance surveillance. So this shows that countries with strong digital health infrastructure are currently leading AI-based drug safety compared to India. The key findings were that our review found that machine learning models consistently improved early signal detection and were better at identifying rare adverse drug reactions compared to the traditional methods. So the learning approaches show strong predictive capability for complex data sets, but required large structured data that we have to give large data set for that AI to function properly. The natural language processing emerged as useful because it could extract the ADR information from unstructured clinical narratives. So in Indian context, the main challenges were fragmented healthcare database, inconsistent electronic health record, and variability in ADR reporting practices. The limited trained forces and absence of standardized regulatory guidance for AI validation. To successfully implement AI-based pharmacovigilance, India will need integrated national safety databases, standardized digital health records, regulatory frameworks for algorithm evaluation, workforce training in pharmacovigilance and analytics. These system level improvements are essential before the AI tools can widely be accepted. So in conclusion, artificial intelligence has strong potential to enhance the pharmacovigilance by improving the signal detection speed, its sensitivity, and enabling the analysis of large and complex data sets. However, India remains at very early adoption stage. Strengthening the digital infrastructure and regulatory oversight and workforce capacity will be a critical for successful integration. And AI should be viewed as supportive tools that complement. It will never replace the traditional pharmacovigilance system. Okay, time over, time over. Yasha, my question is, what is the limitations of your AI-based pharmacovigilance for rural area? You are mentioning only global as well as India level, at least a national level. So in rural area, first of all, there is no electronic health records. All the things are by physical format. So the reporting in so there is very much variability. There is no standardized reporting of ADR. First thing is that. Then when it is uploaded to the VigiFlow or any other software, so there is very much variability in the. So there is very much difference in the physical form and that which is uploaded in the VigiFlow software. Next, there are many. Not every case is reported. There is very much under-reporting of the cases in rural healthcare sectors. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. This is our last presentation for today's session. I would like to invite Dr. Preeti Sahani, ma'am. This is last presentation. Preeti Sahani. Good evening, jury member. I, Dr. Preeti Sahani, Junior Resident of Department of Pharmacology, India, BRD Medical College. My topic of paper presentation is to study the prescribing pattern of proton pump inhibitor in patients at BRD Medical College, Gorakhpur, Uttar Pradesh. Proton pump inhibitors are among the most commonly prescribed medication worldwide. Widely used for GERD, that is gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer disease, dyspepsia, Helicobacter pylori eradication regime,
NSAID-induced gastritis prophylaxis. They are easily available, well tolerated, and cost effective. The increasing trend of empirical and long-term use, especially in OPD, many prescriptions are issued without clear indications, defined treatments, duration, and periodic assessment. The aim of the study is to evaluate the prescribing pattern of proton pump inhibitor in outpatient setting and to assess the rationality of their use. Primary objective is to analyze prescribing pattern of PPI in outpatients. Secondary objective is to assess appropriateness of use, identify common indications, evaluate dose frequency and duration of therapy. Material and methods. The study is prospective, randomized, observational, hospital-based study, which was done in the Department of Pharmacology in collaboration with the Department of Medicine in BRD Medical College, Gorakhpur. The study population were the patient attending medicine OPD department. Study duration was of 6 months. Sample size taken was 150 participants. Inclusion criteria. The patient attending medicine OPD during the study period, prescriptions containing at least one PPI, patients at all age groups, both genders, patients willing to participate. Exclusion criteria, prescriptions not containing PPI, incomplete or illegible prescription, indoor patient or emergency prescription, patient unwilling to participate, follow-up prescription of the same patient. This is the flow chart showing the methodology. Patient attending the medicine OPD during the study period was taken and the prescription containing PPI were identified. After applying inclusion and exclusion criteria, final sample size was selected. The data collection was done, demographic indications and type of PPI, dose and frequency, duration and concomitant drug was noticed. Data compilation and coding was done, statistical analysis was done. After that, interpretation of the prescribing pattern was done. This is the pie chart showing the demographic distribution in different age group and genders. 39%, here we can see 39% of the PPI was prescribed in 31 to 50 year of the patient. 21% of the PPI was prescribed in 18 to 30 years of the patient. 11%, 29% in 51 to 70 years of the age, and 11% in above 70 years. In gender, there is a partial dominance in male. This is the pie chart showing the indications for the PPI use. 31% of PPI was prescribed for GERD, 25% dyspepsia, 23% for NSAID prophylaxis, 12% for gastritis, and empirical treatment in 9%. Types of PPI prescribed was, it was seen that pantoprazole was most... Time up. Yes, Dr. Preeti, yes. In your slide, you are missing three things. The first thing is you are not mentioning ethical clearance. Second thing is you are not mentioning the what is the total patient you are screened in OPD. And the sample size was taken 150 patients. No, you are mentioning only sample size. Yes, sir. But how much total patient are screened? The screening process is separate side now. After screening, then some patients are not reported, some yes, patients are reported. So those patients are reported, you are mentioning for selection 150%. Yes, sir. But you are not mentioning the total patient, how much patient you are screened in OPD. Sir, firstly, I have seen the inclusion and exclusion criteria. Then afterward, I have selected the prescription letter. No. In every clinical data, you should also mention yes, the total patient are you screened in OPD. Okay. Because yes, I am also working in AIIMS New Delhi Pharmacology Department. Okay. And I am also working in clinical data. Yes, sir. But ethical consideration was taken. Yes. Ethical clearance yes, and clearance. Total patient. Okay. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Preeti, ma'am.
Ladies and gentlemen, with this we conclude day one of this enriching international conference. We sincerely thank our distinguished guests, dignitaries, participants for making day one a grand success. The result will be formally declared during the validity session on day two. We look forward to your gracious presence tomorrow. Thank you, juries. Vishal sir and Raj sir, please put your hands together for our judges. I request all the girls to go to their house, and I request all the boys to stay over here. सारे लड़के यहीं रुकेंगे, लड़कियां अपने अपने घर को जा सकती हैं, सिर्फ लड़कियां जाएंगी। लड़के जो वॉलंटियर्स है वो प्लीज आगे आ जाएं। लड़के जो भी वॉलंटियर्स है प्लीज आगे